Hi everyone, we are presently doing economics from NCERT and we have already completed the entire macroeconomics from NCERT word by word, line by line. And now we are doing Indian economic development. And the chapter that we are going to start today is employment, growth, informalization and other issues. And this chapter, I'll break it into two parts. So this is the first part. So you're most welcome to, just bring your Indian economic development book and keep highlighting and writing your notes side by side as I am doing. So you are basically going to read and understand the entire chapter with me during these videos. So keep your notes or keep your book handy so that you can highlight, and please just keep a pen or a highlighter also with you so that you can make side by side good notes. Okay, so let's just quickly start. So basically, every chapter starts with a quote, and that quote starts, it sets a good tone for the entire chapter. So what is this? This is by Mahatma Gandhi, and he says, "What I object to is the craze for machinery, not machinery as such." Okay, so basically saying I'm not objecting the use of machinery, but I'm objecting the craze for machinery. The craze is what is for what they call labor saving machinery. Men go on saving labor. So men are saving labor. So basically, till the thousands are without work and thrown on open streets to die of starvation. So how can men do this to other men? Right? That is what he's objecting to. He's saying that use machinery, use it efficiently, but don't use it to replace men altogether. And don't do that until and unless they are just dying of starvation. So that's the quote setting the tone of the chapter. Now let's read and begin reading the introduction. People do a variety of work. Some work on farm, in factories, banks, shops, and many other workplaces. Yet a few others work at home. Okay, work at home includes not only traditional work like weaving, lace making, or variety of handicrafts, but also modern jobs like programming work in IT industry. Earlier, factory work meant working in factories located in cities, whereas now technology has enabled people to produce those factory-based goods at home in villages. Okay, so during COVID-19 pandemic in 2020-21, millions of workers delivered their products and services through work from home. So very beautifully, this is an updated chapter, and guys, please see. Just to see if this is updated chapter, towards the end of every page you have this written 2024-25, and do visit the NCERT website to download the recent PDF, and yeah, because those are updated. And right now, the updated version also includes in the employment chapter the importance of work from home, because as you can see, I'm also teaching you and working from home. So working from home is a new thing, and for the coming generations who are going to read this chapter and coming in class 12, they should know that work from home is a thing. Okay, so why do people work? Why do they work at all? Work plays an important role in our lives as individuals and as members of the society. Okay, people work for earning a living. Some people get or have money by inheriting it, not working for it. Okay, कुछ लोगों को मिल जाता है. This does not completely satisfy anybody. So even those who are inheriting money and not working for it, वो satisfaction नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है आपने इसके लिए मेहनत नहीं करी है. Right? Being employed in work gives us a sense of self-worth and enable us to relate ourselves meaningfully with others. Okay, every working person is actively contributing to national income and hence development of the country by engaging in various economic activities. And that is the real meaning of earning a living, when you engage in economic activity, right? So we do not work only for ourselves. We also have a sense of accomplishment when we work to meet the requirements of those who are dependent on us, right? So having recognized the importance of work, Mahatma Gandhi insisted upon education and training through a variety of works, including craft. Studying about working people gives us insights into quality and nature of employment in a country and helps in understanding the planning our human resources, right? So it helps us to analyze the contribution made by different industries and sectors towards national income. When you read about employment, when you read or study and analyze about the working patterns, you get to know which
which particular sector is contributing how much into the national income. It also helps us to address many social issues such as exploitation of marginalized section of the society and child labor. So when you see child labor, when you see marginalized sections, you get an understanding. So that is why we study the chapter employment. And also keep noticing every picture that you witness in the NCERT for the picture based questions in your CBSE. So it is a multinational company that sells football made in houses of Jalandhar, Punjab, right? So ye picture deke, if they say what does this picture depict, this picture depicts work from home culture. Okay, so you need to know these are the latest things, and picture based questions are a trend now. So you have to analyze every figure that is given in the chapter. All right. So let's start with a new section, worker and employment. Okay. So what is employment? Who is a worker? When a farmer works on a field, he or she produces food grains and raw material for industries. तो कोई भी किसान जब काम कर रहा है fields पे, वो कुछ grow कर रहा है, वो factories के लिए grow कर रहा है, वो industries के लिए grow कर रहा है, वो raw material grow कर रहा है, right? So cotton becomes cloth, and then further वो cotton जाता है, वो cloth बन जाता है textile mill में and power loom में, ठीक है? And then lorries transport goods from one place to another. We know that the total money value of all such final goods and services produced in a country is called its gross domestic product for that year. You know it very well by now. If you've studied national income chapter, you know that this is gross domestic product, right? So when we consider what we pay for our imports and get from our exports, we find that net earning for country which may be positive. How the net earning may be positive? Net earning may be positive if you are exporting more. Export कर रहे हो उसके बदले पैसा मिल रहा है, import कर रहे हो उसके बदले पैसा दे रहे हो. अगर नेट में जो फाइनल बचा हिसाब किताब करके अगर वो पैसा बच रहा है आपके पास, that means नेट में आपकी earning है. Okay, so basically, if you're net earning for the country, which may be positive, if we have exported more in value terms than imported, and I'm not saying exported and imported in quantity terms, I'm saying value. Value matlab quantity into its price. That's the value. So when we say in value terms, the value of exports exceeds the value of imports. In that case, your net earning from exports is positive. Okay, or negative if imports value exceeds the export in value terms, or zero if exports and imports become equal. Then there's no net earning. The value of exports is equal to the value of imports. When we add this earning plus or minus from foreign transactions, what we get is country's gross national product. So basically इस चैप्टर में भी वो आपको जीडीपी से जीएनपी पे कैसे आना है, कि जीडीपी पे आप जब आप एनएफआईए ऐड कर देते हो एंड आप इसमें ऐड कर देते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो एक्सपोर्ट से अर्निंग है माइनस इंपोर्ट से जो गया, तो आपका जीएनपी आ जाता है, दैट इज नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. ओके, so those activities which contribute to the gross national product are called economic activities. जो भी activities हो रही है, जो भी transactions आप include कर रहे हो gross national product तक पहुंचने के लिए, वो सारी ही activities को हम economic activity कहते हैं. So your mother cooking at home, is it an economic activity? There's a lot of debate, in national income chapter we go through that we should include the value of services and all that. But since your mother is cooking and not selling her services in the market, or she's not selling anything else, so basically that means that what she's doing is not an economic activity, right? So that's how we classify economic activities and non-economic activities. So in whatever capacity, high or low, our workers, even if, so okay, whosoever is helping in the economic activity is a worker. So your mom cooking meals for you, she's not a worker. Okay, so yeah. And even if some of them temporarily abstain from work due to illness, injury, or other physical disability, bad weather, festival, social or religious functions, they are also workers. So worker also include all those who help the main workers in these activities, right? We generally think of only those who are paid by an employer for their work as a worker. This is not so. Those who are self-employed are also workers. So if I am self-employed, I am also a worker. यानी मेरा कोई बॉस नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि मैं वर्कर नहीं हूँ. I am contributing into economic activity. I am a worker, right? So the nature of employment in India is multifaceted. We are talking about India. This is Indian economic development, and
we are saying that the nature of employment here in our country is multifaceted. Some get employment throughout the year, some others employed only for few months in a year. Many workers do not get fair wages for their work. While estimating the number of workers, all those who are engaged in economic activities are included as employment. All right. So you might be interested in knowing the number of people actively engaged in various economic activities, right? So वो बोल रहे हैं multifaceted कैसे है, कुछ लोगों को तो थ्रू आउट द ईयर जॉब मिल रही है, कुछ लोगों को ओनली फॉर फ्यू मंथ्स मिल रही है, कुछ लोगों को मिल ही नहीं रही, और जिनको मिल रही है उनको शायद फेयर वेजेस नहीं मिल रहे. ठीक है. तो इतना, you know, there are so many faces of that employment, which is why we are saying multifaceted. So during 2017-18, India had about 471 million strong workforce. So 2017-18 के year में India had a strong workforce of 471 million people. Okay, तो पता कैसे चलता है कि वर्कफोर्स में कौन है? अभी ये देखेंगे. ठीक है. Since majority of our people reside in rural areas, the proportion of workforce residing there is obviously higher because ज्यादा percentage village में रह रही है, rural area में रह रही है. ठीक है. Okay. So the rural workers constitute about 2/3 of this. So if there are 471 million strong workforce, इस workforce का, you know, this is the 471 million workforce. इसका जो आपका है ना, इतना पाए का 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा रूरल वर्कफोर्स है, सिर्फ इतना हिस्सा अर्बन वर्कफोर्स है. क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल स्टिल रिसाइड इन रूरल एरियाज. तो वर्कफोर्स यानी लोग जो काम कर रहे हैं वो भी तो वहीं रहते होंगे ना, ऑफ कोर्स. सो मेन फॉर्म द मेजोरिटी ऑफ द वर्कफोर्स. देन अब इतने सारे वर्कफोर्स में से अगर मैं जेंडर क्लासिफिकेशन करूं तो ऑब्वियसली मेन फॉर्म द मेजोरिटी ऑफ दिस वर्कफोर्स. अबाउट 77% of the workforce are men and rest are women. Okay, and men and women include child laborers in respective sexes. So they also include child laborers and 77% of the pie. Okay, which again goes nearly, you know, just huge number. 77% men है जो workforce में. Women workers account for 1/4 of the rural workforce. So rural workforce में अगर मैं देखूं, इसी पाए में मैं देखूं, तो आपका जो majority like you know 77% जो है वो men है and 23% ही आपकी women है. अब ये 23% वुमेन में से भी 1/4 जो है वो रूरल एरिया में सिर्फ 1/4 वुमेन वर्कर्स है. ठीक है. 3/4 आर मेन. ओके, वेयर एज अर्बन एरियाज दे आर जस्ट 1/5 of the workforce. Okay, so women carry out works like cooking, fetching water and fuel wood and participate in farm labor. They are not paid wages in cash or in form of cranes. At times they are not paid at all. So for this reason, these women are not categorized as workers. Economists argue that these women should also be workers. What do you think? What do you think? Comment. I mean, I can go and drag this issue on and on, but इन लोगों ने NCERT में स्टार्टिंग में मेंशन करा कि वर्कर्स वो होने चाहिए, वो होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करें, कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, उसके बदले उन्हें पेमेंट मिले. लेकिन यहाँ और इनजस्टिस हो रहा है. सो यू आर बेसिकली रीडिंग एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट वुमेन इन रूरल एरियाज. You know, financial exploitation where they are working, they are made a part of producing the services, but they are not getting paid in return as compared to a man would have been paid if he would have been in her shoes. तो वही, अगर रूरल एरियाज में सेम काम जो वुमेन कर रही हैं जिसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिल रहे, अगर वो आदमी कर रहा होता तो उसको मिल जाते. तो और इसी वजह से क्योंकि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे वो वर्कफोर्स में इंक्लूड नहीं हो रही. यानी जो टेक्निकली नंबर दिख रहा है 1/4 ऑफ द वर्कफोर्स इज वुमेन, वो उससे ज्यादा होंगी क्योंकि ज्यादा काम कर रही हैं लेकिन पैसे नहीं मिल रहे, तो वो वर्कर में काउंट नहीं हो रही when they should be included in the workforce as workers. So what do you have to say? Do write it in the comment. I would love to read it. Okay. Then let's see participation of people in employment. So worker population ratio. Worker population ratio बहुत जरूरी है. आजकल calculation based question भी आ जाता है, definition तो आता ही आता है. Worker population ratio is an indicator which is used to analyze the employment situation in the country. जब भी हमें employment situation देखनी है तो worker population ratio, worker is to population, की पूरी population अगर 100 लोगों की है तो उसमें से workforce कितनी है, workers कितने हैं जो economic activity में contribute कर रहे हैं, वो आपको employment scenario बता देता है.
ठीक है. This ratio is useful in knowing the proportion of population that is actively contributing to production of goods and services. So if the ratio is higher, it means that engagement of people is greater. Of course, worker to population, यानी जितनी population है उसका कितने लोग worker है, अगर वो ज्यादा होंगे इसका मतलब कि काम हो रहा है, economic activity अच्छी चल रही है, engagement of people ज्यादा है, right? If the ratio of a country is medium or low, it means that a very high proportion of its population is not involved डायरेक्टली इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ऑफ कोर्स कर रहे होंगे पर डायरेक्टली नहीं है कि पे नहीं हो रहे उन्हें, मतलब वो नोटिस में नहीं आ रहे. Okay, you might have already studied in lower classes meaning of the term population, right? Population is defined as total number of people who reside in a particular locality, okay, and at a particular point of time, in a particular locality at a particular period of time or point of time कितने लोग रहते हैं वो पता लगता है population. So if you want to know the worker population ratio for India, अब ये फॉर्मूला बता रहा है, प्लीज हाईलाइट. डिवाइड द टोटल, ओके सॉरी, डिवाइड, what is up? Okay, hold on. I'll change the color of the worker population ratio. Divide the total number of workers in India by population in India and multiply by 100. You will get worker population ratio for India. ठीक है. क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बेसिकली बोला कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है. वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है आपका? टोटल वर्कर्स इन इंडिया अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इनटू 100. ये आपको उन्होंने बताया वर्कर पॉपुलेशन रेशियो. ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, जहां वो फॉर्मूला पूछते हैं, अलग अलग फॉर्मूलाज देते हैं, दे एक्सपेक्ट यू टू नो द एक्चुअल फॉर्मूला, ओके, और दे आस्क द डेफिनेशन. तीनों तरह के क्वेश्चन आते हैं. प्लीज कीप अ नोट ऑफ इट. Highlight the particular part that I have highlighted. Okay, if you look at table 6.1, it shows the different level of participation of people in economic activities. For every 100 persons, about 35, by rounding off 34.7, are workers in India. So अगर 100 लोग हैं, every 100 लोगों पे उसमें से 35 लोग यानी 35 persons are workers, which is less, right? कि 100 लोगों में से अगर आप देखोगे तो 35 ही वर्कर है, पर हो सकता है वर्कर बाकी लोग हैं, बाकी लोग भी वर्कर है. जो बचे हुए 65 है, 100 लोग हैं, 100 में से 35 डायरेक्ट वर्कर्स है, यानी इन्हें पेमेंट मिल रही है, ये इंक्लूड हो रहा है नेशनल इनकम में. पर हो सकता है जो बाकी के 65 है उसमें भी वर्कर्स है, उन्हें पैसे भी मिल रहे हैं, वो कमा भी रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट डायरेक्टली नहीं कर रहे जिस वजह से वो नोटिस में नहीं आ रहे. ठीक है. In urban areas, the proportion is about 34, whereas in rural areas, it is about 35. So on an average, obviously 35. ठीक है. Why is there such a difference? People in rural areas have limited resources to earn a higher income and participate more in employment market. क्योंकि resources नहीं है तो और ज्यादा participate करेंगे. Many do not go to schools. स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जा रहे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं जा रहे. सो एंड अगर कोई जा भी रहा है तो वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं बीच में ही टू जॉइन द वर्कफोर्स. वेयरएज अर्बन एरियाज में कंसिडरेबल सेक्शन है जो बेसिकली स्टडी करने जा रहा है, हायर एजुकेशन में जा रहा है, एंड उनके पास ना अर्बन एरिया में वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. अगर आप गांव में रह रहे हो, गांव में स्कूल्स नहीं है, अगर मेजोरिटी लोग स्कूल जा नहीं रहे तो वो छोटी एज से ही वर्कर बन गए हैं, वो काम कर रहे हैं कुछ. और अगर कोई स्कूल जा भी रहा है तो बीच में छोड़ देता है क्योंकि अर्निंग भी करनी है. स्कूल जाके आप पैसा नहीं कमा पा रहे, आप अपने घर को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, सो वो बीच में छोड़ देते हैं. एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नहीं होती रूरल एरियाज में, लिमिटेड ही होती है. तो आपको उन्हीं में से कोई काम करना है, कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया या लिमिटेड काम है. अर्बन एरिया में ऑन द कॉन्ट्ररी वर्कर बनने की जगह बहुत लोग प्रेफर करेंगे हायर एजुकेशन स्टडीज में जाना. उसके अलावा बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं. दे लुक फॉर द अप्रोप्रिएट जॉब टू सूट देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल. तो अगर किसी ने सपोजिटली मास्टर्स कर लिया है या किसी ने एमबीए करा है आईआईएम से, सो वो ऑब्वियसली 3 लाख की जॉब नहीं लेंगे. ठीक है. दे वुड गो फॉर 30 लाख वाला जॉब एंड दे विल वेट फॉर द क्वालिटी ऑफ द जॉब दैट मैचेस देयर स्किल्स. ओके, व्हिच अगेन leads to them not being part of the workforce or not being workers because they are waiting for a good job, that a well-deserved job, right? So in rural areas, people cannot stay at home, and their economic condition won't allow them.
अर्बन एरिया में ये फैसिलिटी है कि आप वेट कर सकते हो, रुक सकते हो, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास सपोर्ट है। रूरल एरियाज में ये नहीं है। रूरल एरियाज में आप बैठ के नहीं बोलोगे जब मेरे स्किल वाली जॉब मिलेगी मैं तभी करूंगा, आपको करना पड़ेगा जो मिल रहा है। इसी वजह से रूरल एरिया में वर्कर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज में। ठीक है, ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो टोटल है इंडिया का, मेन 52, वुमेन 16, उसमें से भी रूरल एरिया का 51 एंड 17 है, एंड अर्बन एरिया का 53 एंड 14 है। राइट, तो ये टोटल है। तो टोटल क्या हो गया, टोटल आपका 34.7 हो गया, जिसमें से रूरल एरिया में 35 है एंड अर्बन एरिया में ऑलमोस्ट 34 है। Right, you know how to interpret it. If I give you this table and if I ask you to interpret this particular number, okay, let's just do it. एक एक केस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं और मैं बोलूं यू हैव टू इंटरप्रेट दिस नंबर, how will you interpret this number? This number is basically what? This number is आप यहाँ से मैच करो वुमेन एंड रूरल। सो रूरल एरियाज में वुमेन वर्कर, यानी वुमेन हु आर कंट्रीब्यूटिंग इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एरियाज अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ओके, टोटल पॉपुलेशन में से कितना है जो वुमेन है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रही है रूरल एरिया में। अब यहाँ ये 17.5, ठीक है, ये एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन है वुमेन की। नो, वो नंबर इससे ज्यादा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन उन्हें पेमेंट नहीं मिल रही उसके बदले, इसलिए वो वर्कर नहीं काउंट हो रहे। ठीक है, काम ज्यादा औरतें कर रही है वहां। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ द नंबर। ओके, देन compared to females, more males are found to be working. The difference in participation rate is very large in urban areas. ठीक है, सो डिफरेंस इन पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है अर्बन एरिया में। यहाँ पे 51-17 है, यहाँ पे 53-14 है। तो आप 51 में से 17 माइनस करो एंड 53 में से 14 करो, तो जो डिफरेंस है पार्टिसिपेशन का वो अर्बन एरिया में ऑफ कोर्स ज्यादा है। ठीक है, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। फॉर एवरी 100 अर्बन फीमेल्स ओनली 14 आर एंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो रूरल में समझ आ रहा है उन्हें पेमेंट नहीं मिल रही, अर्बन में क्या दिक्कत है? ठीक है, देखेंगे। इन रूरल एरियाज फॉर एवरी 100 वुमेन, फॉर एवरी 100 रूरल वुमेन ओनली 18 पार्टिसिपेट इन द एम्प्लॉयमेंट। सो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो मैंने ऊपर बताया था उसमें बेसिकली जो मैंने टोटल पॉपुलेशन बोली थी वो टोटल पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इन रूरल एरिया है। सो 17 क्या बताता है, वर्कर or women participating, rural worker women upon total women in rural areas। ठीक है, क्लियर है? परफेक्ट, let's move ahead. Why are women in general and urban women in particular not working? ये मेरा भी सवाल था। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे? चलो एक बार को रूरल एरिया में मैं समझ रही हूँ कि काम कर रही हैं वो, लेकिन उनको पैसे नहीं मिल रहे उसके बदले, एंड इस वजह से वो वर्कर काउंट नहीं हो पा रही है। तो मे बी हमारा जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो हमें एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं बता रहा है। ठीक है, पर अर्बन एरिया में क्या दिक्कत है यार? अर्बन एरिया में हम क्या सोचें? ठीक है, तो यही ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं, ये क्लियर बोल रहे हैं। इट इज कॉमन टू फाइंड दैट वेयर मेन आर एबल टू अर्न हाई इनकम्स, फैमिलीज डिस्करेज फीमेल मेंबर्स फ्रॉम टेकिंग अप जॉब्स। जहाँ पे आदमी को अच्छा खासा इनकम मिल रहा है, कमा रहे हैं, तो बोलते हैं औरतों को काम करने की जरूरत ही क्या है, क्यों कर रहे हो? ठीक है, उनको लगता है सारे काम सिर्फ पैसे लाने के लिए होते हैं। व्हेन अर्लियर वी रेड कि काम करना सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे उससे पे उतनी ना मिल रही हो, but the work that you're doing, it is keeping you engaged in a good way, right? Going back to what has already been mentioned above, many household activities done by women are not recognized as productive work। and ऐसा नहीं औरतें काम नहीं करती, जो जॉब नहीं कर रही हैं वो शायद ज्यादा काम कर रही हैं। जॉब करना इसका मतलब एक पर्टिकुलर जॉब पे चले जाना है, वो पर्टिकुलर टास्क करना जो आपको दिया आज के लिए। बट व्हेन अ वुमन इज नॉट वर्किंग इन टेकिंग केयर ऑफ द हाउसहोल्ड, and the tasks that are there in the household, so woman is working even more than what she would have worked at an office, right? Why? Because घर में कोई फिक्स टास्क नहीं होता, घर में एंडलेस काम होते हैं, एंड कोई भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम नहीं होता जिसके लिए आपको काम करना है। आपकी मदर संडे भी छुट्टी नहीं लेती, वो सारे काम करती हैं एंड एंडलेस काम होता है उनके लिए। ठीक है, ऑफिस में तो आप गए, लिमिटेड टास्क मिला, बॉस ने इतना काम दिया, इसकी इतनी डेडलाइन है, उतना कर दिया। पर घरों में
ऐसे टास्क नहीं होते. इट इज एन ऑनगोइंग एंड इनफाइनाइट प्रोसेस and the work is huge but which is not recognized as a productive activity, which is a problem, right? So women are working. It's not that women are not working, they are just not counted as a worker because the definition of a worker doesn't include the women who are working at home, okay, or doing the household activities. Basically household activities are not equal to economic activity. That's the problem. So okay, what is this brick making, a form of casual work? तो अभी हम casual work पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे ये फोटो भी आती है and use होती है, but इसको देखेंगे पहले. This narrow definition of work leads to non recognition of women's work and therefore to underestimation of the number of women workers in our country. So basically women workers in our country, the number is underestimated. So they can give you these two numbers and okay, they can ask why this number is low, and you have to mention that the women workers are underestimated because of the narrow definition of a worker. And it includes economic activities, but activities does not include household activities, which is why women are working but not recognized as the worker and therefore not a part of worker population ratio. Perfect. Right. Think of the women actively engaged in many activities within the house and at family farms who are not paid for such work. एज तो अगर वुमेन ये ना करे, वो घर के काम ना करे, तो आपको कोई तो चाहिए जो करेगा एंड देन आप उसको पे करोगे. बट वही चीज जब वुमेन कर रही है घर पे तो उसका रिकॉग्निशन नहीं है उस चीज में. दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? As they certainly contribute to maintenance of the household and farms, do you think their number should be added to number of women workers? That's up to you. You ask this question. I'm asking this question. Do write it. I would love to know your thoughts, the thoughts of my viewers and the students. What do they think? I mean, should, you know, it is okay if you think it should not be included. That's totally fine. At least write it down so that I can get to read and understand where you're coming from. Okay. Then next section, self-employed and hired workers. So self-employed, does the worker population ratio say anything about worker status in society or about working conditions? तो वर्कर पॉपुलेशन, वर्कर का स्टेटस या वर्किंग कंडीशन के बारे में कुछ बताता है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मेरे हिसाब से तो बस आपको टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन बता रहा है. मेरे हिसाब से तो वो नहीं बता रहा कुछ, बट हम रीड करते हैं एनसीईआरटी का हिसाब क्या कहता है. ओके, बाय नोइंग द स्टेटस with which a worker is placed in enterprise, it may be possible to know one dimension, quality of employment in a country. Okay, so क्या बोल रहे हैं वो? Okay, hold on. It also enables us to know attachment a worker has with his or her job and authority she or he has over the enterprise and over other co-workers. अगर हमें पता चल जाएगा quality of the working पता लग जाएगा, तो then हमें पता लगेगा कि वो worker कितना ज्यादा attached है अपनी company से या उसका क्या control है. Let us take 3 workers from construction industry. ठीक है, तो we are taking 3 workers from construction industry. Cement shop owner, कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड सिविल इंजीनियर ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी. तो हमने कंस्ट्रक्शन कंपनी से ही लिया है. तो सीमेंट शॉप ओनर है, कंस्ट्रक्शन का वर्कर है एंड इंजीनियर है कंस्ट्रक्शन कंपनी में. 3 लोग हैं. सिंस द स्टेटस ऑफ ईच वन ऑफ देम इज डिफरेंट, स्टेटस तीनों का अलग है. ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंटली. वर्कर हु ओन एंड ऑपरेट, तो वो बता रहे हैं कि स्टेटस के हिसाब से नाम है वर्कर का. ठीक है, वर्कर हु ऑपरेट, ओन एंड ऑपरेट an enterprise to earn their livelihood are known as self-employed. Self-employed वो होते हैं जो own करते हैं. ठीक है, own करते हैं and operate करते हैं एक enterprise को. Thus a cement shop owner is self-employed. About 52% workforce in India belongs to this category. So if there's a workforce in India which is 34%, okay, then out of that 34%, almost 15%, so 17% are self-employed. Majority of the employed people are self-employed, right? कैसे पता चल रहा है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ तो रूरल एंड अर्बन का डिस्ट्रीब्यूशन है, बट टोटल वो बोल रहे हैं 52% बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी. कंस्ट्रक्शन वर्कर कौन हो गए? कंस्ट्रक्शन वर्कर कैजुअल वेज लेबरर्स हो गए एंड दे अकाउंट फॉर 25%. ओके, 25% वर्कफोर्स. यानी अगर मैं बोलूं टोटल वर्कफोर्स, तो टोटल वर्कफोर्स का अगर टोटल वर्कफोर्स 100 है, तो टोटल वर्कफोर्स में से 50% तो सेल्फ एम्प्लॉयड ही हो गए आपके, 25% कैजुअल वर्कर्स हो गए. ठीक है, कैजुअल वर्कर्स जो डेली वेजेस पे काम करते हैं.
Such laborers are casually engaged in others' farm, and in return, they get remuneration for the work done. Workers like the civil engineer working in the construction company account for 23% of India's workforce. ओके वर्कर्स जो होते हैं जो किसी कंपनी में प्रॉपरली काम कर रहे हैं वो 23% ही हैं. When a worker is engaged by someone or an enterprise and paid his or her wages on regular basis, they are known as regular salaried employees. रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज बताते हैं. सो बेसिकली वो यहाँ पर अब वुमेन मेल एंड फीमेल में उन्होंने यहाँ पे डिवाइड करा है. इस पूरे चार्ट को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है. सो वर्कफोर्स उन्होंने पहले तो टोटल वर्कफोर्स कितनी डिवाइड करी है. टोटल वर्कफोर्स उन्होंने बोला कि 52% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है. उसके बाद जो आपका 23% है, 23% है रेगुलर सैलरीड एंड 25% है आपका कैजुअल, ठीक है. अब इसमें से मेल का क्या है, मेल का भी 52 ही है. फीमेल का यहाँ पर आप देखोगे तो फीमेल में हमें दिखेगा कि कैजुअल ज्यादा है, ठीक है. सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे 52% है, एंड रेगुलर सैलरीड सबसे कम है. रेगुलर सैलरीड कम है वुमेन, ठीक है. ये चीज हमें यहाँ पे पता चल रही है. Okay, look at chart 6.1. You will notice that self-employed, this is important. Self-employed is a major source of livelihood for both men and women. At this category accounts for more than 50% of the workforce. ठीक है. Then casual wage worker is the second source for both men and women. Casual में जो आपका है, and then इन्होंने rural urban में भी classify करा है कि rural में क्या है and अर्बन में क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड. सो आप रूरल में देखोगे सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा है, एंड अर्बन एरिया में आप देखोगे यहाँ पे तो अर्बन एरिया में रेगुलर सैलरी जॉब ज्यादा है, ठीक है. तो ये एक डिफरेंस आया, एंड यहाँ पर आपको रेगुलर सैलरी जॉब सबसे कम दिखेंगी रूरल में. ओके, एंड यहाँ आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी दिख रही है अर्बन एरिया में. अर्बन एरिया में आपको कैजुअल वर्क सबसे कम दिखेगा. तो आई थिंक ये तो आप अगर कॉमन सेंस लगाओ तो भी समझ सकते हो कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, अर्बन एरिया में क्या चल रहा है एंड रूरल एरिया में क्या चल रहा है, ठीक है. पर आपका मेजर सोर्स ऑफ वर्कर अगर मैं टोटल देखूं तो आपका कैजुअल वर्कर जो है वो सेकेंड सोर्स है, एंड अ लिटिल मोर सो फॉर लैटर. So when it comes to regular salaried employment, both men and women are found to be engaged in greater proportion. Men form 23%, whereas women form 21%. The gap between men and women is very less. Okay. So when we compare the distribution of workforce in, तो अभी हमने gender wise distribution classify करी थी chart 6.1 में. जेंडर वाइज वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन थी जहां हम देख रहे थे कौन कैसी जॉब में एम्प्लॉयड है. अब हम अर्बन एंड रूरल का डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, एंड इन अर्बन एंड रूरल एरियाज यू विल नोटिस दैट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड कैजुअल वर्क लेबर्स आर फाउंड मोर इन रूरल एरियाज दैन इन अर्बन एरियाज. क्योंकि रूरल एरिया में बड़ी बड़ी कंपनीज एमएनसीज नहीं है ना कि रेगुलर सैलरी जॉब हो, अर्बन एरिया में वो है. सो इन लैटर बोथ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरी जॉब्स आर ग्रेटर. इन द फॉर्मर, सिंस मेजॉरिटी ऑफ दोज depending on the farming own plots of land and cultivate independently, the share of self-employment is greater. क्लियरली अंडरस्टूड है. रूरल विलेज को अपने दिमाग में रख के देख लो, इन तीन कैटेगरी रख लो जॉब की, कैजुअल वर्क, रेगुलर सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड. आप खुद ही एक पॉइंट पर आओगे. आप जब मैच करोगे इस चार्ट से तो ऑलमोस्ट मिलता हुआ होगा, ठीक है. द नेचर ऑफ द वर्क इन अर्बन एरियाज इज डिफरेंट ऑफ कोर्स, ठीक है. ऑब्वियसली एवरीवन कैन नॉट रन फैक्ट्री, शॉप, ऑफिसेस ऑफ वेरियस टाइप्स. मोरओवर, enterprises in urban areas require workers on a regular basis. That's true. Okay, so that is the case. Then guys keep reading this is very important. Boxes में ना इनमें भी हम कभी कभी मिस कर देते हैं, बट इससे क्वेश्चन आता है तो ये आपको बेसिकली देख लो यार. कैजुअल वर्क, अभी आप उन एनसीईआरटी ने आपको सिखाया द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर सैलरीड जॉब्स, ठीक है, कैजुअल वर्कर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड. तो जब उन्होंने आपको ये बता दिया है तो अब वो आपको बहुत सारी कैटेगरीज दे रहे हैं. दिस इज योर टास्क, जस्ट गो एंड रीड एंड इनमें से क्लासिफाई करो कौन रेगुलर सैलरीड है, कौन सेल्फ एम्प्लॉयड है, कौन कैजुअल वर्कर है. ओके ओके. देन यहाँ पे ये क्वेश्चन भी होता है, कभी कभी आ जाता है कि इकोनॉमिस्ट पॉइंट आउट दैट कैजुअल वेज लेबरर्स आर मोस्ट वल्नरेबल अमंग थ्री कैटेगरीज. Could you locate who these workers are and where they are found? This is very amazing question. Okay, then can we say that self-employed earn more than casual wage laborers or regular salary? Identify few other indicators of quality of employment. बहुत अच्छे क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ पे और इनसे पेपर में भी दे देते हैं जो हमें पता नहीं लगता है कभी कभी, ठीक है. सो देन ये पिक्चर्स देखो, पिक्चर्स आर सो इम्पोर्टेंट. गारमेंट वर्कर्स
अपकमिंग फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन. सो ये सारी चीजें आपकी कॉन्स्टेंटली होती रहती है, एंड यू शुड keep just taking note of the pictures that are there. Okay, then this is the final section for the day of part 1, and then we'll continue this chapter with part 2 with other sections. So यहाँ पे employment in firms of factories and offices. So in the course of economic development of a country, labor flows from agriculture in other related activities to industry and services, right? किसी भी एक्टिविटी में फ्लो ऑफ स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर में होगा, वहां से इंडस्ट्री में आओगे, वहां से सर्विसेज में जाओगे. In this process, workers migrate from rural to urban areas. Of course, आपको rural से urban area में migrate करना पड़ेगा. Eventually, at a much later stage, the industrial sector begins to lose its share of total employment as the services sector enter a period of rapid expansion. तो जब लोग एग्रीकल्चर सेक्टर था रूरल एरियाज में, जब लोग वहां से जा रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, माइग्रेशन हो रही थी अर्बन एरियाज में, उस टाइम सर्विस सेक्टर आया एंड सर्विस सेक्टर ने कंट्रोल ले लिया, तो अर्बन एरिया की उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई एंड सर्विसेज बूम हो गई. दिस शिफ्ट कैन बी अंडरस्टूड बाय लुकिंग एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय इंडस्ट्री. जनरली वी डिवाइड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू 8 different industrial divisions. So all economic activities are divided into 8 different industrial distinctions or divisions. Number 1, agriculture, mining and quarrying, then manufacturing, electricity, gas and water supply, construction, trade, transport and storage, and services. For simplicity, all the working person engaged in these division can be clubbed into 3 major sectors. तो ये 8 sectors है, but हमने इनको भी classify कर दिया 3 sectors पे. Primary sector, which includes 1 and 2. प्राइमरी सेक्टर क्या इंक्लूड करता है? एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग. देन सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड करता है 3, 4 एंड 5. इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग में आती है. एंड देन ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज में आता है. ठीक है. Then table 6.2 shows distribution of working person in different industries during 2017-18. अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज में क्लासिफाई करा ही है, तो देख लेते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में पॉपुलेशन का क्या सीन है. ठीक है, जैसे प्लेस ऑफ रेजिडेंस देख लो, रूरल अर्बन. रूरल में सबसे ज्यादा यहाँ पे कहाँ पर इंडस्ट्रीज में लोग इंक्लूडेड है? प्राइमरी सेक्टर में, रूरल एरिया में. ठीक है. अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा इंक्लूडेड है सर्विस सेक्टर में. अब मेन एंड वुमेन वाइज देख लो, मेन सबसे ज्यादा कहाँ इंक्लूडेड है? मेन सबसे ज्यादा इंक्लूडेड है अगेन प्राइमरी सेक्टर में. इवन वुमेन सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूडेड है. देन उसके बाद सेकंड सोर्स क्या है? सेकंड सोर्स यहाँ पे देखोगे अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा लोग, सेकंड सोर्स हर चीज का आपको दिखेगा. ओके, गो ऑन. मोस्टली आपको जो फाइनली दिखेगा वो दिखेगा कि सर्विस सेक्टर में आपके जो अर्बन एरिया है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है. एंड आपकी जो मेन एंड वुमेन का अगर आप देखेंगे तो मेन एंड वुमेन बोथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें कम है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में सबसे कम है. ठीक है, ये नंबर 1, ये नंबर 2 एंड ये नंबर 3. सेक्टर वाइज देखोगे सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी में है, देन सर्विस सेक्टर में, टर्शरी में, सबसे कम इंडस्ट्री में. वो यही कह रहे हैं ग्रोथ होनी चाहिए थी प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी, बट जंप आया सीधे प्राइमरी टू टर्शरी. ठीक है, इंडस्ट्री और सेकेंडरी सेक्टर रिमेन स्टैग्नेंट. That's what we are saying. Secondary sector provides employment to only 24% of the workforce. About 31% of the workers are in service sector. Table 6.2 shows that about 60% of the workforce in rural India depends on agriculture, right? About 60%. So forest and fishing. About 20% of the rural workers are working in manufacturing industry, construction and other industrial activities. And service sector provides employment to about 20%. Basically वो टेबल का इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं आपको. ठीक है. एग्रीकल्चर इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज की सेटिंग कैसी है? सर्विस सेक्टर ही मेजर कंट्रीब्यूटर होगा, एग्रीकल्चर थोड़ी होगा, एग्रीकल्चर रूरल में होगा. अबाउट 60% ऑफ द अर्बन वर्कर्स आर इन सर्विस सेक्टर. द सेकेंडरी सेक्टर गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू ओनली 1/3 ऑफ द अर्बन वर्कफोर्स. ठीक है. अब वो मेन एंड वुमेन में डिफरेंस कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो मेन एंड वुमेन का बता रहे हैं कि दो men and women workers are concentrated in primary, women workers concentration is very high there. About 57% of the female workforce is employed in the primary sector, majority यानी रूरल एरिया में. तो कनेक्ट करो पहले, रूरल एरिया में वर्कफोर्स ज्यादा थी वुमेन की, तो रूरल एरिया में अगर वर्कफोर्स ज्यादा है तो मेजोरिटी ऑफ द वुमेन कहाँ है? रूरल एरिया में.
रूरल एरिया में वर्कफोर्स ज्यादा है, तो रूरल एरिया में वुमेन जो है वो कोई इंडस्ट्रीज में या सर्विस सेक्टर में थोड़ी इंक्लूडेड होंगी, वो प्राइमरी में होंगी, तो मेजोरिटी ऑफ द वुमेन वर्कफोर्स कहाँ पे होगी, प्राइमरी सेक्टर में होगी। कंपेयर टू दी अर्बन सेक्टर, आज अर्बन सेक्टर में वुमेन का कॉन्सेंट्रेशन ही कम है, ठीक है। सो वेर एज लेस देन हाफ ऑफ मेल वर्क इन दैट सेक्टर, men get opportunity in both secondary and service sector, and इस वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, औरतें गांव में बाकी के काम करती हैं, ईंटें उठाना, कंस्ट्रक्शन करना, एग्रीकल्चर संभालना, एंड आदमी उसी गांव से माइग्रेट कर जाते हैं सिटीज में सेकेंडरी और सेकेंडरी सेक्टर में जॉब की तलाश में या सर्विस सेक्टर में जॉब की तलाश में, बिकॉज वुमेन आर नॉट इवन परमिटेड टू माइग्रेट। सो एंड वुमेन, जो औरत काम करके उस काम का पैसा नहीं कमा पा रही जो कि आदमी करता तो उसको मिल जाता गांव में, तो जब वो वहां पे वर्कर नहीं काउंट हो रही तो उनको माइग्रेट थोड़ी करने देंगे कि बोलेंगे रूरल एरिया से आप बाहर जाओ और आप जॉब करो, नहीं, वो आदमियों को ही अलाउड है वहां पे। इसलिए मेन आर देयर इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज मोर, एंड ओवरऑल ऑल्सो जो आदमी है वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उन्हें टू गो इनटू द सेकेंडरी और द सर्विस सेक्टर, व्हिच द वुमेन डोंट गेट, एंड दैट इज व्हाई वुमेन आर मेजरली एम्प्लॉयड इनटू द प्राइमरी सेक्टर। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे एंड वी आर डन। इसके जो भी चैप्टर का द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर इज प्रोबेबली दैट वी आर गोइंग टू डू इन द पार्ट 2, बट लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड पार्ट 1। एंड गाइस, फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, सो फॉर फ्यू चैप्टर्स आई गिव यू द टाइमलाइन, जैसे इंडिया चाइना पाकिस्तान चैप्टर आई गिव यू द टाइमलाइन that these are the years, these are the events, these are the remarks, and what these events were for, and all of that, right? But in this particular chapter, my takeaway advice for you all would be concentrate on the pictures, what the pictures are saying, because NCERT pictures are used directly, and a 1 mark question or the MCQ question or even a 6 mark question is created that depict the picture. So if a picture is showing that women are working from home, so they will ask you kind of employments and different question. Or if a picture is about casualization, so they will ask you about the sectors or the classification of the category of the employment, like there's casual workers, then there are regular salaried workers, self-employed, so they can ask you any question. And also number 2 would be concentrate on the table and the pie charts. At least do not, you don't have to remember the data, but you have to remember the trend कि ज्यादा कहाँ पर है, कम कहाँ पर है, या एम्प्लॉयमेंट में मेजर सेक्टर कंट्रीब्यूशन मेन का है, ज्यादा रूरल एरिया में, ठीक है, एंड रूरल एरिया का मेन ज्यादा या वुमेन ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। सो ये ट्रेंड्स कहीं पे नोट कर लो। इफ यू वांट पार्ट 2 के एंड में आई ब्रिंग यू द ट्रेंड्स, सो आई डोंट वरी, चलो आई ब्रिंग यू द ट्रेंड्स, ये भी मैं कर दूंगी, ठीक है। यू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडिंग विद मी, एंड या keep preparing, stay healthy, stay happy, most importantly keep that smile with you. I'll see you with part 2. Bye bye.